Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing. Today's topic is spread of modern education in India. Learning topics: education in India, emergence of the modern system of education, motives of British educational policy, beginning of modern education in India, drawbacks of modern education system, Indian initiative. Education in India. Education in India can be traced back to the 19th century when it was mostly religious in nature, and during that period people were educated in the gurukuls. Education was imparted in a traditional way through pathshalas and madrasas. Subjects like law, medicine, literature, logic, classical languages like Persian, Sanskrit and Arabic were taught. The East India Company did not take any effort to upgrade the courses nor promote the education. During the British period, there was a network of elementary schools and the students were taught religious passages. The elite group of people alone availed the higher education, especially the Brahmins in Hindu religion and upper class Muslims. There were other groups in the society which were giving a different kind of education. They were the Christian missionaries, the social reformers and the European mercantile classes. The above groups viewed the modern education in डिफरेंट वेज. तो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में पुराने ही टाइम से देखा गया है. स्टार्टिंग में गुरुकुल्स में पढ़ाया जाता था, फिर धीरे धीरे अलग अलग टाइप की लॉ, मेडिसिन, लॉजिकल रीजनिंग, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं जैसे पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, ये भी सिखाई जाती थी. जब ब्रिटिशर्स आए तो ना तो उन्होंने इस सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश करी, ना ही एजुकेशन को प्रमोट करा. इन सब के अलावा जो कुछ एलीट क्लास ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज थे उन्हीं को हायर एजुकेशन लेने का मौका दिया जाता था. और इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस थे जो अलग तरीके से पढ़ाई को देखते थे और एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते थे. वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स. The Christian missionaries felt that the modern education will make the people to follow the Christianity and it will undermine the faith of people in their own religion. Raja Ram Mohan Roy believed that education was essential to remove the social evils from the society. The mercantile group of people felt that educated Indians are needed to promote trade and market. तो Christian missionaries का पढ़ाने का तरीका अलग इस वजह से था क्योंकि उनको लगता था हम अगर अपने तरीके से पढ़ाएंगे तो उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड राजा राम मोहन रॉय जैसे जो लीडर्स थे उनका पर्पस ये था एजुकेशन का ताकि जितनी भी इविल्स हैं, गलत चीजें हैं समाज की, उनको उखाड़ के फेंका जा सके. Quick facts. Nalanda University was a renowned center of higher education in India. It was established in the earlier 5th century CE. It can be regarded as the oldest university in the world. नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही काफी ज्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में से एक रह चुकी है. Emergence of the modern system of education. The British came to India as a trading group. Eventually, when they took control of the administration of the country, they felt the acute need for clerks to maintain records and files. तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसमें फाइल्स को डॉक्यूमेंट करा जाता था, चीज़ों को सेव करके रखा जाता था, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ की वजह से स्टार्ट किया था. To get them from England did not seem a viable proposition as these positions were lowly paid. That was when they decided to introduce the English system of education in India. This would serve a twofold purpose. One, there would be a rich pool of literate Indians who would be able to discharge the duties of clerks effectively. Two, by being introduced to the English system of education, Indians would be able to relate themselves more to the British ways of life and conduct. So the East India Company created an education system aimed at the acculturation of Indians to European attitudes through the teaching of English. Schools that were previously set up were forced to adhere to the colonial government's curriculum. The textbook culture emerged as a means of controlling thought. उसके बाद
इंग्लैंड के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने सोचा कि फाइल्स को वहां से इंडिया में लाना कोई एक वायबल तरीका नहीं है। उन्होंने सोचा जो लिटरेट इंडियंस हैं वो क्लर्क्स की तरह इंडिया में ही काम करेंगे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। इनका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाने का भी यही रीजन था कि अगर हम अपने तरीके की पढ़ाई लेकर आएंगे तो इंडियंस अपने कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे और ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। टेक्स्ट बुक्स का भी यही रीजन था ताकि थॉट्स को कंपाइल किया जा सके और लोगों के दिमाग में वो सारे थॉट्स को डाला जा सके। The Calcutta Madrasa was established in 1781 by Warren Hastings and Banaras Sanskrit College in 1791 by Jonathan Duncan. Christian missionaries also started opening English medium schools. जो कलकत्ता मद्रासा है, बनारस यूनिवर्सिटी है, ये सारी भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही स्टैब्लिश हुई थी और इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करते थे। Motives of British educational policy. As the British conquered India and settled down in this country, they had to devise an educational policy to impart education to the Indians. The most important reason for giving modern education to the Indians was that British wanted a cheap supply of educated Indians who will work as clerks in their administration. It was too costly and perhaps not even possible to bring Englishmen from England for these jobs. So the British introduced modern education in India in order to cut down the cost of administration. तो education लाने का पर्पस ही यही था क्योंकि ये छोटे मोटे जो काम हैं ये इंग्लिशमैन यहाँ पर आकर नहीं करेंगे। इसी वजह से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाया गया ताकि जितने भी लिटरेट पढ़े लिखे जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो लो वेजेस पे इन ऑफिसेज में काम किया करेंगे। The British also expected that if Indians were given modern education, they would become good subjects and accept British rule willingly. They would accept the culture and policies of the British and will become loyal supporters of the British rule in India. A humble beginning was made in 1813 when the British passed the Charter Act. और ब्रिटिशर्स का ये करने का एक होल सोल पर्पस ये था कि जितने भी इंडियंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्ट हो पाएं और उनकी सारी बातें बिना सोचे समझे मानना शुरू कर दें। इसका पहला प्रमाण था पहला चार्टर एक्ट। Beginning of modern education in India. The British, as well as many other groups of society, such as the Christian missionaries, the indigenous reformers, the European commercial and mercantile classes, etc., felt the need for a fundamentally different kind of education. All these groups wanted a change in the education system of India because of different reasons that we have discussed above. Social reformers such as Raja Ram Mohan Roy believed that modern education was necessary for eradication of social evils like sati and widow remarriage from Indian society. तो Christian missionaries जो सोशल रिफॉर्मर्स अलग अलग सेक्शंस थे उनका पढ़ाने का जो रीजन था वो अलग अलग था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जैसे जो रिफॉर्मर्स थे उनका सिर्फ एक ही रीजन था कि अगर पढ़ाया लिखाया जाएगा लोगों को तो जितनी भी सोशल इविल्स हैं सोसाइटी से उन्हें इराडिकेट किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। लेट अस सी हाउ द मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड इन इंडियन सोसाइटी। नंबर 1, अर्ली एफर्ट्स। इन द बिगिनिंग द कंपनी नेवर रियलाइज्ड इट एज इट्स ड्यूटी टू गिव एजुकेशन टू द इंडियन। द कमर्शियल कंपनीज सोल मोटिव वाज ओनली टू अर्न प्रॉफिट्स एंड नॉट to spend money on education. Nevertheless, some British officers in their individual capacity tried to make reforms in this direction. In 1781, Warren Hastings did some work in this direction. Similarly, Sir William Jones, a judge of the Supreme Court, founded the Asiatic Society of Bengal in 1784. This society in later years did a lot of work in spreading education. In 1792, the resident of Benares took special interest in spreading education and started several English schools and colleges where English was taught. The missionaries started for the same purpose the Wilson College at Bombay, the Christian College at Madras and the St. John College at Agra. Some progressive Indians like Raja Ram Mohan Roy also started English schools. He set up the Hindu College at Calcutta in
1817 with the help of some British. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्पसेस से आपके जो स्कूल्स थे, एजुकेशन सिस्टम था, उनको स्टैब्लिश करा गया था. जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग लोकेलिटीज पे अपना एक्सटेंट चाहते थे, अपना रूल चाहते थे, इस वजह से उन्होंने स्टार्ट किया था. इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया था ताकि सारे सोशल स्टिग्मास को इरेडिकेट किया जा सके. नंबर 2, Charter Act of 1813. England officials were feeling that time the company should do practically little for the intellectual and moral development of the Indian people. It was, therefore, led in the Charter Act of 1813 that the company would set aside a sum of rupees 1 lakh for promoting the knowledge of modern sciences in India. But even this meager amount was not utilized for several years as no decision could be reached as to what the medium of education should be. Starting से ही Britishers का ये रीजन कभी नहीं था एजुकेशन इंडिया में लाने का कि इंडियंस को प्रमोट किया जा सके. एक ही रीजन था कि वो सारे ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्टेड फील कर सके और उससे जितना भी फायदा है ट्रेड में वो ब्रिटिशर्स को मिल सके. इसके अलावा उन्होंने इंडियन पीपल के लिए साइंसेज में रिसर्च करने के लिए 1 लाख रुपए तक का प्रोविजन भी दिया था, लेकिन बहुत सालों तक इसका यूज ही नहीं हो पाया क्योंकि किस मीडियम में उसको पढ़ाया जाए, रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करी जाए, वो डिसाइड ही नहीं हुआ. Number 3, Lord Macaulay and decision regarding the medium of instruction, 1835. It was during the period of Lord William Bentinck, 1828 to 35, that Lord Macaulay and Raja Ram Mohan Roy, a representative of the progressive Indians, made efforts so that a decision was taken in 1835 to promote the teaching of Western sciences and literature through the medium of English alone. Wilson and several Indians opposed this decision, but Lord William Bentinck upheld the Macaulay view. Another important step was taken to encourage English learning in 1844 when it was decided during the period of Lord Hetheridge that only those Indians who had sufficient knowledge of English be appointed on government jobs. उसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे मैकेले और राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ने इंग्लिश मीडियम में सारी की सारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लाने का तय करा. बहुत सारे लोगों ने अपोज भी करा, जिसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड थे, ब्रिटिशर्स भी इंक्लूडेड थे और इंडियंस भी थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकेले व्यू को सपोर्ट किया और इंग्लिश में ही सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को आगे तक पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया. Number 4, Charles Wood's Dispatch, 1854. In 1854, the British government declared its intention of creating properly articulated system of education from the primary school to the university. This declaration, known as the Wood's Dispatch of 1854, was the most important step in the development of education in India. It set forth a comprehensive scheme of promoting education in India. उसके बाद चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्पैच था, जिसके तहत एक आर्टिकुलेटेड सिस्टम जो एजुकेशन का है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया. It was recommended therein that an education department was to be established in every province, universities on the model of the London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. At least one government school should be opened in every district. Affiliated private schools should be given grant in aid. The Indian natives should be given training in their mother tongue also. इस वुड डिस्पैच में ये प्रोविजंस थे कि हर एक प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट अफिलिएटेड या स्टेट अफिलिएटेड स्कूल्स होने चाहिए और जहां के जो भी नेटिव्स है वहां पर उसी लोकल लैंग्वेज में मदर टंग में भी पढ़ाई होनी चाहिए. Drawbacks of modern education system. Introduction of modern education was a mixed blessings. Some of its drawbacks were as follows. Number 1, neglect of the common people. By educating the members of the higher and the middle classes only, the company created a serious gap between various classes of the Indian people. The only object of their educational system was to prepare clerks who would carry on the work of the company's administration smoothly. It simply shows the selfishness of the company. इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स का तरीका था पढ़ाने का
अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को ही पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से अमीर और गरीब लोगों में बहुत बड़ा गैप बन गया था। और इनका रीजन भी एक ही था कि इन लोगों को पढ़ाया जाएगा और उसके बाद एज अ रिजल्ट ये सारे लोग इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरों की तरह काम करेंगे। Number 2, lack of funds. Even the meager amount of 1 lakh set aside for educational purposes could not be spent till 1833. There were hardly any primary schools and whatever few existed suffered because of the lack of funds. जो 1 लाख अलग किया गया था पढ़ाई के लिए वो भी यूज में नहीं आया था 1833 तक, और इसके अलावा कुछ स्कूल्स अगर बन भी जाते थे तो फंड्स की कमी के कारण वो ढंग से नहीं चल पाते। Number 3, the medium of instruction. Since the English was the medium of instruction, common people remained aloof from it. All the subjects were taught through English. As such, the study of Indian languages was neglected. All those who got their training in English considered themselves superior to others. और क्योंकि ये पढ़ाई हमेशा इंग्लिश में होती थी, बहुत बड़ा सेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल इससे अलग थे, और जो लोग जिनको इंग्लिश आ जाया करती थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना करते थे एज कम्पेयर टू द पीपल जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। Number 4, neglect of scientific and technical education. The English government never paid any attention toward imparting scientific and technical education. But till 1857, only 3 medical colleges, one each at Calcutta, Bombay and Madras, and one engineering college at Roorkee, were opened. Admission to these colleges was open only for the Europeans. As such, the Indians were almost totally neglected. जो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज के लिए मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे जैसी जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, इंजीनियरिंग के लिए रुड़की में बनाया गया, लेकिन यहाँ पे एडमिशन सिर्फ यूरोपियंस को ही अलाउड था, और इस वजह से जितने भी इंडियंस थे उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, पीछे छोड़ा जाता था। Number 5, neglect of the women's education. The education of girls was neglected. No funds were set aside for the education of women, as women's education had no utility for the English. On the other hand, in doing so, they were afraid of hurting the sentiments of the people, as the conservative Indian opinion was against giving any education to their women folk. इसके अलावा औरतों को पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ब्रिटिशर्स ये करने से भी डरते थे क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग थी उस टाइम पे कि अपनी औरतों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए इतने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट जाना भी ब्रिटिशर्स को लाजमी नहीं लगता। इंडियन इनिशिएटिव। व्हेन द इनएडिक्वेसीज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम केम टू द फोर, enlightened Indian rulers and intellectuals like Raja Ram Mohan Roy, Rabindranath Tagore, etc. themselves played a leading role in the spread of education. During the early years of the 20th century, leaders of the freedom movement formed a National Council of Education as a revolt against British control over education. They set up national schools and national colleges. Later, they established Vidyapeeths at Banaras and Ahmedabad and the Jamia Millia Islamia Institute at Aligarh, which was later shifted to Delhi. They also tried to give shape to a new enlightened vision of education. उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी ही एजुकेशन काउंसिल बनाई। मद्रास, अलग अलग लोकेशंस पे, अलीगढ़, दिल्ली में अपनी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल की स्थापना करी एज अ रिजल्ट कि अलग अलग जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना जो इतना भी इस्टेब्लिशमेंट अपने फायदे के लिए कर रहे हैं वो ना करें, कम करें। Quick facts. Rabindranath Tagore wrote Jana Gana Mana in Sadha Bhesha, a Sanskritized register of Bengali, and it is the first of 5 stanzas of a Brahmo hymn. It was first sung in 1911 at a Calcutta session of the Indian National Congress and was adopted in 1949 by the Constituent Assembly of the Republic of India as its national anthem. तो जन गण मन जो कि नेशनल एंथम है हमारी कंट्री का, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये एक बंगाली हिम है और स्टार्टिंग के जो 5 स्टैंजाज हैं वो ही लिए गए थे 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर established the Visva Bharati University at Shanti Niketan, which adopted a global outlook for the teaching of the art and culture. Mahatma Gandhi started schools under his Nai Taaleem or the New
new teaching scheme. William Jones established the Asiatic Society at Calcutta in 1784, which encouraged the study of India's past heritage. इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी. महात्मा गांधी ने भी नई तालीम यानी कि न्यू वे ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया. इसके अलावा विलियम जोन्स ने भी एक सिस्टम को जन्म दिया जहां पे इंडियंस को ये प्रोविजन दिया गया था कि वो अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट हेरिटेज के बारे में जाने. Growth of national education. The Swadeshi movement called upon Indians to boycott schools and colleges administered by the British. In November 1905, a conference was held in Bengal to create an education system managed by the Indians. Thus, the National Council of Education was set up from the funds given by rich Indians. Soon, many national schools and colleges were set up both at primary and secondary level. In its Calcutta session in 1906, the Indian National Congress also encouraged the opening of indigenous educational institution throughout the country. इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन है वो और भी ज्यादा ग्रो कर गया था जिस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां पे कि ब्रिटिशर्स के स्कूल्स और ऑफिसेस को बॉयकॉट करने की अपील करी गई थी. The British did pave the way for modern education in India to suit their own requirements. Education helped in spreading awareness and enlightenment and soon became a dominant reason for the emergence of Indian national movement. तो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत तो करी थी अपने फायदे के लिए, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, बट इसी रीजन की वजह से शायद हमारे देश को आज़ादी मिली क्योंकि अलग अलग लीडर्स को मौका मिला रिवोल्ट करने का. Recap. Till the 19th century, education in India was largely religious in nature and was imparted in madrasas and pathshalas. The British advocated the introduction of Western education in India as they needed literate Indians to participate in administration. The East India Company did little to promote education. The Charter Act of 1813 and the Woods Dispatch of 1854 helped to spread modern education among Indian society. The modern education helped the British to get a huge clerical force for numerous administrative jobs. Indigenous universities were established at Baroda and Aligarh for promoting higher education in India. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, बट विद टाइम यही रीजन बन गया ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर फेंकने का. स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.